country is reeling from intense monsoon rains, cloudbursts, flash floods, mudslides, and devastating urban flooding. This climate-induced catastrophe has impacted over 5 million lives across 4,100 villages, over 1,000 precious lives. Catastrophe. Ladies and gentlemen, Pakistan's contribution to global greenhouse gas emissions is almost negligible, but we bear impacts far beyond our share. Our commitment to delivering on our climate agenda, however, remains steadfast and unwavering. In our 2021 nationally determined contribution, Pakistan committed to an unconditional 15% reduction in projected greenhouse gas emissions by 2030 as part of an overall target of cutting emissions by 50%. I'm pleased to share that Pakistan has already delivered on its unconditional pledge of a 15% reduction. Renewables are presently providing over 32% of Pakistan's power mix. Solar energy has grown sevenfold since 2021. 23,000 hectares of mangroves have been restored. However, the implementation of Pakistan's national adaptation plan is hampered severely due to inadequate international climate finance. Ladies and gentlemen, I'm pleased to announce here that we shall increase the share of renewables and hydropower to 62% of our energy mix by 2035, expanding nuclear energy capacity by 1,200 megawatt by 2030, shifting 30% of transport to cleaner mobility by 2030, and establishing 3,000 charging stations nationwide, scaling up climate smart agriculture, safeguarding water security, and advancing the plantation of 1 billion trees. Excellencies, in conclusion, may I say, while Pakistan is willing and determined to be part of the solution to the climate crisis, we hope and expect that the international community will also honor its commitment for the sake of our future generations. And my last line is that loans over loans, adding to loans, is not the solution. Thank you very much, and God bless you. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक समिट से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। पाकिस्तान में कार्बन का अखराज सबसे कम है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समिट से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसे वक्त में मैं आपसे मुखातिब हूँ जब मेरे अहले वतन मानसून बारिशों से शदीद मुतासिर हुए हैं। 2022 के सैलाब में पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान उठाया है। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर हो रहा है। शदीद मुतासरा मुल्कों में भी पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेस में कमी के लिए अमली इक़दामात कर रहा है।